headquarters and infrastructure. So some of them, for example, Bhavalpur, is associated with the murder of an American reporter called Daniel Pearl. So the world is aware of this. We gave a message, sir, that we were not open to any mediation, that anything now between us and Pakistan would only be bilateral. We gave a message that we will not accept nuclear blackmail, that whatever talk there may be about nuclear danger, that will not deter us from going ahead with Operation Sindhu. We gave a message that we are now responding to Pakistani attacks and we will keep responding. And if that fighting is to stop, Pakistan must make a request, and that request can only come through the channel of the DGMO. Now, as I said, sir, a number of countries spoke to us. There was, I think, particular interest in the House about the conversations with the United States. So let me share a few words there. So first of all, it is somehow being implied that talking to the United States or being in touch with the United States is itself a problem. Now, the fact is, over a period of time, if you look at our history, you look at world history, countries contact each other at such times. And look at ourselves. I will not talk about what happened in 1962. What were the letters written after 1962? Because even today it hurts me to read what Pandit Nehru wrote to John Kennedy after 1962. But let me refer to 1971. That when the fighting started, Prime Minister Indira Gandhi writes to President Nixon that in this hour of danger, the government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton. Please, nothing will go on record. Sanjay ji, baith jaiye, please. You speak. From the policy of wanton aggression and military adventurism that they have unfortunately embarked on. May I request Your Excellency to exercise your undoubted influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India. Please let him speak. आप उनकी बात सुने आपको मौका मिलेगा जवाब देना. प्लीज हर बार खड़ा होकर डिस्टर्ब. संजय जी, ये गलत परंपरा है. आप अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. प्लीज ये जिम्मेदार आचरण नहीं है. ये संसदीय मर्यादा नहीं है. आप अपनी बात कहेंगे, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपकी इच्छा अनुसार कोई बात कहेगा. प्लीज शक्ति सिंह जी बैठे. आपने अपनी बात कही, दूसरे पक्ष को सुनिए. प्लीज आप बोलिए. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. प्लीज आप बोलिए. Now let me come to what were the contacts between India and the United States. So on the 9th of May, Vice President Vance called up the Prime Minister to warn him that there was, in the American assessment, a massive Pakistani attack which would come in the next few hours. Prime Minister listened and made it very clear that if anything like that happens, it would get a fitting and appropriate response from our side. Now, a few hours later, that happened. And then, sir, that fitting and appropriate response also happened. And that fitting and appropriate response disabled the entire Pakistani air defense system and rendered all their main airfields inoperative. Now, at this stage, we started getting calls saying we think that the Pakistanis are ready to stop fighting. So, please, Secretary Rubio come. No, Mr. Surjewala, not allowed. Please. So, please speak. So that will go on the record. The response which we gave, the response we gave to anybody who spoke to us was that the Pakistani side has to make a request, and that request has to come through the DGM.
No. Wait. No, I'll tell you. Sit down. I'll tell you who called. Now, sir, I want to make three things clear. One, there was no leader, nobody anywhere in the world who asked India to stop its operations. This is something the Prime Minister also said. Number two, there was no linkage with trade. No, I'll tell you. So there is no linkage of trade. There was no linkage of trade in any of those conversations. And there was no cause between Prime Minister and President Trump. Now, so nothing is going on record. Mr. Surjewala, please don't disturb them. Please. Please, nothing is going on record. Please. So I think if honorable members will sit down and allow me to continue. During this period, as I said, we had a number of conversations with different countries. We had conversations with the US, we had a conversation with the EU, we had a conversation with Saudi Arabia, and I want to say this. When all the calls which I got are actually on record, they are on my social media record. So it was on the 10th of May, we got calls from US, we got calls from Saudi Arabia, we got calls from a few other countries. Most नहीं आप इस तरह नहीं, please आप इस तरह आचरण. So the point is, to everybody the answer was the same. The answer was, if the Pakistanis want to stop fighting, the Pakistanis have to request us. The Pakistanis have to request us through the DGMO channel. And that, sir, is exactly what happened. Now, sir, I would like to... माननीय शक्ति सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाए. आप बैठे, संजय जी बैठे, प्लीज. आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड की जाती है. So, I would like to please share what is the response. So, आप डिसऑर्डर मत क्रिएट करें, प्लीज. एज पर रूल्स, गो बाय रूल्स. शक्ति सिंह जी, आप कुछ भी बोले, आप अपनी बात कुछ भी रखें, दूसरे की बात न सुने, सही नहीं है. प्लीज. Sir, I would like to respond to I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Please. Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry sir, I should address the remarks to you. Please. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं. ये सही परंपरा नहीं. आप अपनी बात कहें और दूसरे पक्ष की बात न सुने. ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है. आप सब लोग धैर्य से सुने. प्लीज आप बोले. Sir, now if we come to how the world responded, I think प्लीज नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है. आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. आप दूसरा पक्ष सुनते नहीं है. प्लीज, आप अपना पक्ष कहते हैं, दूसरे का भी सुनिए. प्लीज. In terms of the UN, in terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the council. We are not members of the council. Despite not being members of the council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement
इसलिए बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीट पर बैठकर इस तरह से न चिल्लाएं, न कमेंट्री करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, डू नॉट फोर्स मी प्लीज। प्लीज 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 असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें, प्लीज बैठ जाइए, आप बोले प्लीज। So the UN Security Council on the 25th of April, और ये सर आप सोचे कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. Now, not only that, sir, in this period, if you look, because lot of comments were made yesterday, how good was Indian diplomacy? आपके कितने लोगों को समझा पाए, कितने लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट क्या थी? सर, we had a statement from Quad, we had a statement from BRICS, वो बहुत अलग-अलग ग्रुप थे, but yet Quad was specific in condemning the terrorist attack in Pahalgam and repeating the call of the UN Security Council to bring the perpetrators and organizers to justice without any delay. In the case of BRICS, so the very BRICS which after Mumbai 26/11 could not even use the word cross-border terrorism. आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे, आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और अगर आप ब्रिक्स में देखें, BRICS has a specific reference to cross-border movement of terrorists, nothing is going on record, please, and safe havens. सर आगे देखें सर, we were able to get Central Asian countries. Please. We were able to get Central Asian countries to oppose providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, terrorism financing. We were able to give Indian Ocean rim countries. We were able to get Germany. We were able to get France. We were able to get European Union. We were able to get Russia. Sir, अगर आप रशिया का देखें, President Putin has said that this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment. So, sir, I want to say that in terms of diplomatic support, we were able to get a wide range of countries, including our neighbors. Every one of our neighbors, barring Pakistan, issued a statement expressing solidarity, condemning Pahalgam. So, a lot of them said explicitly that people should be brought to justice. So, I do want to say that in terms of diplomatic understanding of what was happening, that let me speak. In such kind of noise, so all people are on this matter. No. आप सभी लोग एक साथ खड़े होंगे, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसको अलाउ करूं? I cannot. Please, you all sit. Please. Yes, Sushmita ji, tell me. Honorable Minister, just a minute. You tell me. Sir, Rule 240, irrelevance or repetition. The chairman, after having called attention of the council to the sir, he is repeating everything that is. Honorable Minister, it's irrelevant. Please. Please take your seats. Honorable Minister. ठीक है सर, डिस्टर्ब नहीं होते। आप कंटिन्यू करिए। मैं सर डिस्टर्ब वो लोग होते हैं, वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम
हिस्ट्री की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो सबको समझना चाहिए। सर, lot of questions. So, questions have been raised about how Operation Sindoor progressed. I don't want to say very much. I just make 4 points. One, anybody who wants to see, who wants to judge what was the success of Operation Sindoor, please go to YouTube and look at the funerals which were taking place in Pakistan. When you see whose funeral, who's attending, you get the answer. Number 2, if you are still not satisfied, please go to YouTube again and please look at the pictures of Pakistani airfields. Please look at the Pakistani airfields. Please see the destruction of Pakistani airfields, and you will see how successful Operation Sindoor was. Now, sir, there were 2 great centers of terrorism. 2 great centers of terrorism. दुनिया जानती है सर, हम सब लोग जानते हैं, पिछले 25 साल से सब जानते हैं सर, भावलपुर और मुरीद के, they have been the biggest centers of terrorism directed against India. Today sir, Bhavalpur and Murid ke are reduced to dust. Point of order, disorder create करने के लिए I am not entertained. Please, Honorable Minister, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप अपनी जगह बैठ जाए, आपको बोलने का जब मौका आएगा अपनी बात कहेंगे. No, please. So, sir, I want to say this. Nothing is going on record your For decades, Bhavalpur and Murid were considered the biggest centers of terrorism, not just in Pakistan, for global terrorism. So let me tell you, when we hit Bhavalpur and Murid the whole world thanked us for what we did. We did a global service. When we reduced it to dust, when those funerals were taking place, when people came to cry over those dead terrorists lying around, that was the success of Operation Sindoor. Now, sir, sometimes people are determinedly skeptical because if government does something, wo us side baithe, they cannot bring themselves to believe it. So I want, sir, to quote from people who are involved on the other side. So Prime Minister Shehbaz Sharif says, our armed forces were prepared to act at 4:30 in the morning after Fajr prayers to teach a lesson. But before that hour even arrived, India once again launched a missile attack using BrahMos, targeting various provinces of Pakistan, including the airport in Rawalpindi and other places. This is the Prime Minister of Pakistan admitting. People are skeptical. Ki bhai success hua nahi hua. Now, he says again, sir, General Munir called me on secure line and said India's ballistic missiles have hit the Noor Khan air base. So when people ask, sir, what brought end to fighting? What brought cessation of fighting? Sir, the Indian armed forces did not require anybody else. The Indian armed forces achieved that. Anybody, I want to say this, sir, anybody who says that some other party brought this about is disrespecting the Indian armed forces. The Indian armed forces ensured this. It was our bombing, it was our strikes, it was our destruction of the airfields. That is what happened on 10th May. That is why the phone call came. That is why they said, okay, we are now willing to accept this. So I think when people, for scoring political points, should not get so carried away that they then decry the great achievements of the Indian armed forces for which we are all gathered here. I mean, how low can your politics go? So sir, I want, sir, to now come to where we are. Now, I used, sir, the word new normal. I understand there were some objections. Some people thought it's not the right word.
I will rephrase it, sir. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Okay? And let me tell you, sir, what is the Modi normal? The Modi normal is terrorists are not proxies. Number two, cross-border terrorism will get appropriate response in our way at our time. Three, talks and terror will not go Please, together. John Britas. If there are talks, it will only be about terror. Number four, we will not give in to nuclear blackmail. And number five, terrorism and good neighborliness cannot go together. And therefore, sir, blood and water will not flow together. And I know some members raised some issues about it, but I want to say, dams may have taken years to build before. This is Modi government. Things are different. You will see the change on the ground. And again, I repeat, blood and water will not flow. Now, sir, some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया. तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली. अब सर इनको छोड़िए. इनके अलावा एक और चाइना गुरु है. अब सर अब ऐसा है सर. जयराम जी. सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर, वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर. आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ. अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते. और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे, कहीं और से भी थे. तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में. पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती, तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है. तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं. तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं. तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए. सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी. हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू. 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया. 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई. 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर. 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी. 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर. और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद. तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट. अब आगे बढ़िए सर. 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर.
2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर, 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील कर, पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उस चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमान के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेड बैठ कर कमेंट्री न करें, कोई बात नहीं, आपको नहीं जा रही सर। 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाई। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए टास्क फोर्स की घोषणा हुई, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो फिर आपने टेलीकॉम Please take your seat. Please take. No, you cannot. टेलीकॉम When your opportunity comes, you speak. No. टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान पर आज सर Mr. John Prakash, please take your seat. आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए। प्लीज take your seat. नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज। आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में सर, अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है, आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा, प्लीज। सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान, कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बनटोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सर 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि जब 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई, और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई, इस सदन में उठाई गई, इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं,
अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन किन से मिले इसको डिस्कस करने? तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया? सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of three mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. So, Please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please. sir, no, please, because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु करते. अब सर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो रही थी. ये कुछ लोगों का मत था कि भाई कब रिकवर होगा, और जैसे राजनाथ जी ने कहा सर कि हमें पूरा विश्वास है सर कि एक दिन जरूर होगा, और ये सदन की सोच भी है. ये खाली मेरी सोच नहीं है, ना सरकार की सोच, ये पूरे सदन, पूरे देश की सोच है. और मैं सर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम कहते हैं 47, 48, 49 में बात बनी, पर सर 63 में नेगोशिएशंस हुए इस पे. 65 में हाजीपीर की बात हुई सर, लौटाया गया. 72 में जो जमीन जो हमारे हाथ में था वो भी लौटाया गया. तो आज जब लोग पूछ रहे, जिनके मन में कभी कल्पना नहीं थी कि भागलपुर और मुरीद के गिराएंगे, जिन्होंने कहा कि बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद मुंबई इज इनएक्शन, that we should not go to war because that is not attack Pakistan, because better option than attacking Pakistan, वो लोग सब पूछ रहे हैं पीओके के बारे में. ये कैसा सवाल है उनसे? और सर यूएस और पाकिस्तान की भी बात कहीं जिक्र हुई सर. यूएस और पाकिस्तान, अब सर ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच कुछ और है, अमेरिका की सोच कुछ और है. ये आज की बात नहीं. So historically, we have had a different view, we have had different policy, we have had different interests, and it has been a problem between India and United States. Not today, not between this government and that administration, previous government and then administration also. I have been in the room, sir. I have been in the room when America was taking up the case of General Musharraf and asking for concessions on Kashmir. So I want to say this, that on this issue, we have a national policy. No mediation is a national policy. Bilateral dealing is a national policy. I hope today no talks without, that is no terror, only then talks will also be a national policy, and everybody will agree. So it is not the first time that we have had differences with the United States. So there were some other questions which were raised about US. You know, have we stood up and taken up various issues? Sir, I would like to inform the House through you, sir. Every issue that we have had with the United States, we have had no hesitation taking up. We took up deportations. Today, we do not have that problem. We took up visas. We took up the cause of students. Now, Mr. Chidambaram requested whether we should take up Harvard, sir. मैं तो JNU का पढ़ा हूँ, sir. मैं Harvard का नहीं हूँ. So I hesitated to take up Harvard. And sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart, and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest.
We have the ability to stand up to wherever we have to, on whichever issue we have to. So what is important today for the House to recognize is Operation Sindhur today is a well-considered, thought-through response. It was a response to this barbaric attack in Pahalgam, but today it has become the basis for a new policy. That basis, what I called the new normal, the Modi normal, is something which has been communicated very clearly to Pakistan and to the world. And finally, sir, let me end my remarks with a very, very sincere expression of appreciation for all the members of parliament and for those outside parliament as well, who joined the parliamentary delegations. I think each one of them, sir, each one of them, whether it is Shashi Tharoor ji, whether it is Kanimori ji, whether it is Ravi Shankar Prasad ji, Baijan Panda ji, Sanjay Jha ji, sir, Supriya Sole ji, or Shrikant Shinde ji, sir. Every one of them and all the members, every member took a united stand abroad. They did our country proud. Yes. They answered all doubts. And I can tell you from every country, they visited 33 countries. John, yes, John, you know, I thank you too. Sir, I don't want to read out everybody's name. I would like to read out, but sir, samay ki seema hai. But again, I want to say this, sir, very, very sincerely, that they have done a great national service. They showed a united spirit, and we hope that that is the spirit with which the nation will support Operation Sindhur. Thank you. दोला सेन जी, प्लीज आप बंगला में बोलेंगी, प्लीज स्पीक. नो, नथिंग इज गुड. प्लीज आप you speak. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me chance to speak on this subject. And thanks to my party, All India Trinamool Congress, and our respected leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me opportunity to speak. I will try to deliver my speech in Bangla, our beloved mother language. খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার যে বিরোধীরা দাবি করা সত্ত্বেও সংসদে স্পেশাল সেশন না হলেও শেষ পর্যন্ত 3 মাস পরে সংসদের অধিবেশনে যে এই বিষয়ে 2-3 দিন ধরে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, এমনকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথাতেও এতজন নিরীহ নাগরিকের, মানুষের, দেশবাসীর মৃত্যুতে কোনো দুঃখ প্রকাশ শোনা গেল না। এনাদের কোনো খারাপ লাগা নেই। It's not only that they are not feeling guilty, they are not even sorry. So unfortunate, sir. মানবিকতাহীন, মনুষ্যত্বহীন এই শাসক দল বিজেপি। লজ্জা। সদনে দাঁড়িয়ে বিদেশ মন্ত্রীও অসত্য বলছেন স্যার। অসত্য। So sad, sir. কি দুঃখজনক যে যখন পহেলগাঁও যুদ্ধ অপারেশন সব প্রশ্নে আমাদের বিরোধীদের স্ট্যান্ডে ছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার, তখন অকারণ বিরোধীদেরকে দায়ী করে খুব ছোট নিম্ন স্তরের রাজনীতি করলেন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী। একবারও বললেন না ইন্টেলিজেন্স ফেলিওরের কথা, বা হোম মিনিস্ট্রি কোন বিন্দু মাত্র দোষ আছে, দায় আছে, দায়িত্ব আছে, যার জন্য পহেলগাঁওতে এতজন নিরীহ নাগরিক, পরবর্তীতে পুঞ্চ রাজৌরি, জম্মুতে আরো কতজন নিরীহ সাধারণ মানুষ, কত সেনা জওয়ান, আর্মি অফিসার, পাইলট সহ আর্মির পদাধিকারীরা প্রাণ গেছে, তাই তারা দুঃখিত না, কোনো দুঃখ প্রকাশ নেই এনাদের। 26/11 পর কিন্তু 4 দিনের মাথায় 30 নভেম্বর 2008 তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, মুম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ছেড়েই দিন, গোয়েন্দা প্রধানের মেয়াদ বাড়লো, চাকরির পুরস্কৃত হলো। ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার পহেলগাঁওয়ের ঘটনার ঠিক আগে 3 দিন ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে, কিসব যেন ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত বড় ব্যর্থতার পরেও এত অ্যারোগ্যান্স, অহংকার, ঘামান্ড, স্যার, জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, কন্ডেমেবল, ভাবা যায় না। 370 ধারা তুলে দেওয়ার সময়ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে ট্রেজারি বেঞ্চ রাজ্যসভা থেকে আমাদের মতো অনেক বিরোধীকে সাসপেন্ড করেছিল, তবে তা পাশ করতে পেরেছিল। তখন কি ঘোষণা ছিল তাদের? এর ফলে জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হবে, ভূস্বর্গে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হবে, শান্তি আসবে। হয়নি তো।
পহেলগাঁওয়ের ঘটনা তো ওদের ওই দাবিকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, ধুলিসাৎ করে দিয়েছে, তবুও ওরা লজ্জা পেয়েছে কি না? কেন? কেন গোয়েন্দা বিভাগ আগাম খবর দিতে পারেনি? কেন ঠিক তখনই বৈশারণ ভ্যালিতে কোনো পাহারাদার ছিল না? কেন পর্যটকদের সব ঠিক হয় বলে অ্যালাউ করা হলো? কেন এতজন মারা গেল? কে উত্তর দেবে? পুলওয়ামার মতো পহেলগাঁওয়েরও কোনো দিন কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার। 1 মাস 2 মাস 3 মাস পার হয়ে গেল, 100 দিন হয়ে গেল, যারা সন্ত্রাস করছে তাদের কোনো খোঁজ ছিল না। যেই আলোচনা শুরু হলো সংসদে, অমনি তাদের 3 জনকে খুঁজে পেয়ে মেরে দেওয়া হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাহলে এদের অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছিলেন স্যার, যাতে ঠিক আলোচনার সময়ই মেরে দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন? সো অ্যাস্টনিশিং স্যার, নইলে এত বড় কোইন্সিডেন্স কি করে হয়? 370 কি, কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে একটা নির্বাচিত সরকার করেছিল, সেই ইতিহাসকে মুছে দিয়ে, ভুলিয়ে দিয়ে আর একটা সরকার তাকে একতরফা তুলে দিল। কাশ্মীরিয়াত, কাশ্মীরের অধিবাসীদের যে নিজস্বতা, তাকে বারবার আঘাত করেও কি এই সরকার আরো বেশি করে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করছে না? লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে জম্মু কাশ্মীর গিয়ে শ্রীনগর, ডাল লেক, পহেলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ, জম্মু সব জায়গায় একটা কথাই বলতে শুনেছি ওখানকার সাধারণ মানুষকে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের এই স্টেটহুড তাকে ডিমোশন করে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া হলো, এটা মানতে পারছি না। ঠিকই তো, এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সময় জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মত নিতে একটা গণভোট নেওয়া উচিত ছিল নাকি? আমরা কৃতজ্ঞ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে। ধর্ম জেনে বেছে বেছে আত্মতায়ীরা হত্যা করেছে, এটা জানার পরেও এই সন্ত্রাসবাদ রোখার জন্য তারা মুখ খুলেছেন, এক হয়েছেন, মিছিল করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, ভূমিকা নিয়েছেন। উই স্যালিউট দেম। কাশ্মীরকে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলেই তো শুধু হবে না, ওখানকার দিন আনি দিন খাই গরিব মানুষগুলি যাবেন কোথায়, খাবেন কি? পর্যটনই সেখানে বাঁচার খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আর তা তো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তখন বাঁচার উপায় কি? খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রধানমন্ত্রী, মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, বিকশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনেক লম্বা ভাষণে এই সমস্যা বা সমাধানের কথার উল্লেখও আমরা শুনিনি। শেম শেম। তিনি বললেন কোন দেশের কোন নেতা নাকি তাদেরকে যুদ্ধবিরতি করতে বলেননি, আর তার মুখে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা গেল, কিন্তু স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে একবার নয়, দুবার নয়, একাধিকবার বারবার বলেছেন তিনি নাকি বাধ্য করেছেন এই দুটি দেশকে যুদ্ধবিরতি করতে, সিজ ফায়ার করতে। এর উত্তরে এতদিন ধরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছু তো বলেনই। সংসদে দাঁড়িয়েও বিশ্বগুরু, 56 ইঞ্চি ছাতির আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে সিনা টান করে বলতে পারলেন না কেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অসত্য, তা অসত্য? কালকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী